अच्छा, हमने अमाइंस तक पढ़ा था। अमाइंस के बाद अब जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज अमाइड्स। अमाइड्स और अमाइंस में फर्क ये होता है कि अमाइंस में अल्काइल चेन के साथ we have NH2 functional group. These are known as amines. अमाइड्स क्या होते हैं जिसमें ये वाला फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो और उसके आगे फिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन NH2। तो अमाइड्स में हमारे पास ये वाला फंक्शनल ग्रुप होता है, कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के कार्बन के लेफ्ट पे अल्काइल लगा हुआ हो सकता है और नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन भी हो सकते हैं और इसकी जगह पे अल्काइल भी आ सकते हैं। ठीक है। अमाइंस जब हमने पढ़ा था तो वी एस्टैब्लिश दैट अमाइंस आर बेसिक इन नेचर जस्ट लाइक अमोनिया। व्हाई अमाइंस आर बेसिक इन नेचर? बिकॉज जस्ट लाइक अमोनिया, nitrogen has a lone pair of electron which is readily available to be donated to H positive ion which can accept H positive ion. Amines also have a nitrogen. Nitrogen has a lone pair of electron or it is more readily available to be accepted by H positive ions. Reason because अमाइंस के साथ जो है वो एल्काइल चेन जो लगी हुई होती है, एल्काइल एक्चुअली इज अ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इट pushes its electron towards nitrogen, जिसकी वजह से this lone pair is more readily available to accept H positive ion. So amines are actually more basic than ammonia that we studied in amines. However, if we talk about the basicity of amides, because amides also have a nitrogen which has a lone pair, so it should also accept H positive ion. However, due to the presence of this electronegative oxygen atom, oxygen withdraws the electron charge density of the lone pair from nitrogen towards it. इसकी वजह से this lone pair is not available easily to accept H positive ions. So in short, amides do not behave like a base. Amines behave like a base. Amines are basic in nature. However, amides are not basic, or you can say they are neutral. ठीक है, और reason वही है, lone pair और nitrogen atom is not available to be donated to H positive ion due to the presence of electronegative oxygen atom. ठीक है। अच्छा, how amides are formed? ये हमने already पढ़ लिया है। Acyl chlorides when react with ammonia, they produce amide and HCl. For example, if we have ethanoyl chloride and it is reacted with concentrated ammonia, it will produce ethanamide. अच्छा, अमाइड की जो नेमिंग है वो हम लोग इस तरह से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव ये वाला जो अमाइड है ना, दिस इज नोन एज इथेनमाइड। वी विल काउंट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द मॉलिक्यूल ऑफ अमाइड। इसमें 2 कार्बन है तो इट्स नेम वुड बी इथेन। अब जैसे इथेन होता है ना, उसके लास्ट का ई हम नहीं लिखेंगे, विल जस्ट राइट ETHAN एंड देन अमाइड। It sounds like we are writing ethane, but actually in spelling we won't write E after N. So this is ethanamide. Similarly, if we have 2 carbons in the alkyl chain before amide, then this would be named as propanamide. Spelling of propane is PROPANE, but we won't write E and we'll write propane and amide, propanamide. जैसे अल्कोहल्स का नाम दिया था, 3 कार्बन वाला अल्कोहल इज प्रोपेनॉल, राइट? सो वी वोंट राइट, जैसे प्रोपेन है ना, so we won't write E, but instead of E we would write OL, प्रोपेनॉल। इसी तरह 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड इज प्रोपेनोइक एसिड। तो जैसे प्रोपेन होता है, अगेन वी विल रिमूव E and we'll write oic in place of E, so this would become प्रोपेनोइक एसिड। इसी तरह से अमाइंस में भी हम लोग ई नहीं लिखेंगे, इथेनामाइड, प्रोपेनामाइड, ब्यूटेनामाइड एंड सो ऑन। सही है, यहाँ तक बात समझ आई? तो हाउ डू वी प्रिपेयर अमाइड्स? बस रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ एसाइल क्लोराइड्स with concentrated ammonia, it will lead to the production of amide and together HCl. अच्छा, ये रिएक्शन हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं विद द रिएक्शन मैकेनिज्म।
Let's say if we have ethanoyl chloride, so ammonia will act as a nucleophile, and the reaction mechanism of acyl chloride is addition and elimination reaction mechanism. So होगा क्या इसमें? The reaction mechanism is addition and elimination. This is ethanoyl chloride. ये acyl chloride है ना? इसका नाम है ethanoyl chloride. It has a partial negative charge over oxygen and partial negative charge over chlorine and partial positive charge over carbon. Ammonia will act as a nucleophile and it will attack this partial positive carbon. And it will make a bond with this carbon. So it will become NH2, जिसकी वजह से carbon oxygen bond, one of the carbon oxygen bond will break. वो negative charge आ जाता है इस पे. And ultimately carbon chlorine bond will also break. And the carbon oxygen bond, the pi bond, will regenerate itself. And the chlorine will leaving NH2 with carbon. और साथ में जो हाइड्रोजन आपका अमोनिया से निकला है NCl that has left from acyl chloride, it will produce HCl in the gas form. That's why we see the white fumes of HCl. क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, similar reaction can also take place with amines. Acyl chlorides can also react with amines to produce amines. For example, again, let's take ethanoyl chloride and ethylamine. This is ethanoyl chloride. We are taking ethylamine. So then nitrogen on the amine will act as a nucleophile, and similar reaction mechanism will take place, and this nitrogen will make a bond with carbon. NCl will be eliminated. Will be left with nitrogen, और इस nitrogen के साथ जो alkyl chain है, it will stay as it is. And so we will get amide like this. अच्छा, and how do we name such an amide? इस amide को हम नाम किस तरह से देंगे? देखो, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जो है उससे पीछे वाली जो चीज है ना, it has 2 carbon, including the carbon with oxygen. So if we count the total number of carbon, ये वाले before nitrogen, there are 2 carbon before nitrogen. तो amide के नाम के साथ 2 carbon वाला नाम आएगा, मतलब it would be called as ethane amide. However, there is another alkyl chain after nitrogen, so we have to name this alkyl chain as well. So this is ethyl because it has 2 carbon, and we have, in order to show the position of this ethyl, it is attached with the nitrogen. So we will use nitrogen as one of those numbers. जैसे हम लोग 2-methyl propane इस तरह से नाम देते हैं ना, तो nitrogen पे ये लगा हुआ है. So in order to show that ethyl is connected to the nitrogen, we will write N-ethyl ethanamide. Let's say if we have this acyl chloride, इस acyl chloride का नाम है, this is butanamide. Oh, sorry, butanoyl chloride. This is the acyl chloride. And if it reacts with ethylamine, product में we will get, देखो, chlorine will get eliminated, and the nitrogen of the amine will make the bond with the carbon attached with oxygen.
ये वाला. And this nitrogen has alkyl chain attached to it, so it will stay as it is, and only one hydrogen is left over the nitrogen. अच्छा, इसका नाम बताओ क्या होगा. So amide would be this carbon and everything attached before this carbon would come in the name of amide. So there are total of 4 carbon. This would be called as butane amide. And with nitrogen, we have 2 carbon alkyl chain, which is ethyl, and it is attached over the nitrogen. So we would say N ethyl butanamide. समझ आई ये बात. आगे बढ़े. Okay. Let's see another reaction in which butanoyl chloride is reacting with, now this time I'm taking secondary amine. So let's take this amine C2H5 2NH. This is the secondary amine. This is diethyl amine because we have 2 alkyls attached to the nitrogen. इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है. You have CH2 CH3 here and CH2 CH3 here. Or we can also write the structure in this form. Instead of writing CH2 CH3, we can also write C2H5. So there are 2 carbon directly attached with the nitrogen, hence this is a secondary amine. Again, this will function similarly as that of the ethylamine. The nitrogen will go and make a bond with carbon, eliminating the chlorine. First addition will take place and then elimination of chlorine. और प्रोडक्ट क्या होगा इसका. देखो इसमें से क्लोरीन हट गया ना, और इसकी जगह पे nitrogen will make a bond with it. And this nitrogen can only make 3 bonds, right? So there are 2 alkyls already attached with this nitrogen. So there is no room available for hydrogen now. So nitrogen has to lay off its hydrogen. So the amide form in this case is this. Can you tell me the name of this amide? इस amide की naming किस तरह से करेंगे. देखो we have carbon oxygen double bond से जो पहले वाले जितने भी carbon है ना, you have to count them and they become the name of amide. There are total of 4 carbon. So this would be called as butane amide. And with nitrogen, we have 2 alkyl chains and both alkyls are attached to the nitrogen. So we have to write N, N diethyl butanamide. अच्छा, अगर ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता ना, लेट्स से if nitrogen has one ethyl chain attached to it and another methyl chain attached to it. Again, this carbon पे oxygen है, उससे पहले there are total of 4 carbons, right? Including that carbon with oxygen. So this would be called as butanamide. However, with nitrogen, we have 2 alkyl chains attached to it, which are different. तो हमें दोनों की naming करनी है, ethyl भी methyl भी. One carbon chain is methyl and the other alkyl chain is ethyl. So we would write ethyl first because E comes first. We have to write it in the alphabetical order. This is N-ethyl dash N-methyl
butanamide. क्लियर है? Okay, moving on. Okay, another reaction that we have already discussed, that acyl chlorides react with ammonia to produce amide. Acyl chlorides also react with amine to produce amide. ये हमने देख लिया. अच्छा, यहाँ पे एक बात ये लिखी हुई है कि if we use excess amine, so the amine are basic in nature, and the product, one of the product is HCl, which is acidic in nature. HCl is an acid, amine is a base. So the amine, excess amine will react with the byproduct of this reaction, which is HCl. So it will produce ethyl ammonium chloride. Because amines behave as a base, और उनके नाम में हम लोग अमोनिया माइन लिखते हैं when they accept a proton. जैसे C2H5 NH2, when it accept one proton, one H positive ion, so it will become NH3. उस पे positive charge आ जाता है. और इसका नाम फिर ethyl amine था, but now when it has gained a proton, it would be called as ethyl ammonium ion. ठीक है, ये एग्जांपल हमने डिस्कस कर लिए जिसमें एनकॉमन डाइथाइल ब्यूटानामाइड बना है. अच्छा, next we have hydrolysis of amides. And what is hydrolysis of amides? Amides can, just like if you remember in O level, you also in AS level, you must have studied about the hydrolysis of esters. Esters functional group is broken down in back to its monomer like this. Similarly, amide can also be broken down from here. Carbon nitrogen bond in amide is broken down like here. और hydrolysis करवाने के लिए we have to add water because hydrolysis is done by water. So in order to speed up that reaction, we can use catalyst which can be acid or alkalis. So with acid, it would be called as acidic hydrolysis. And with alkalis, it would be called as alkaline hydrolysis. So जब acidic hydrolysis होगी, so amide will break down in this part. Anything before carbon would become carboxylic acid, and after carbon with nitrogen it will become an amine. तो यहाँ पे जो R1 और R2 लिखा हुआ है ना, these are two different amine chains. R1 is with carbon having bonded with oxygen. R2 is the alkyl chain bonded with nitrogen. Example ले लेते हैं ना अभी जो हमने amide बनाए थे. Let's say if we have this amide, and if you want to do the hydrolysis of this amide, it is N-ethyl and methyl butanamide. नाम था इसकी हाइड्रोलिसिस हम दो तरीकों से करा सकते हैं. Acidic hydrolysis and alkaline hydrolysis. Acidic hydrolysis में it will break down into two products. एक तो ये पीछे वाली चीज मिल जाएगी. This is C3H7 C double bonded oxygen and OH. This will become butanoic acid. And another product would be this
इसमें नाइट्रोजन है and it will produce amine. CH3 C2H5 उसके साथ एक हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा. So this is N ethyl and methyl amine. With alkaline hydrolysis, same will happen. लेकिन ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है ना, एल्कलाइन अमाइन सेम बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड भी सेम बनेगा. But as this carboxylic acid is produced, what happens is sodium hydroxide reacts with this carboxylic acid. तो ये जो carboxylic acid बना है, sodium hydroxide is used as a catalyst actually, but it will react with this carboxylic acid to produce a salt, which is sodium butanoate. End result हमें ये मिल रहा होगा इसमें. क्लियर है? आगे बढ़े. अच्छा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस में भी अगर हमने एसिड जो है वो मिनरल एसिड जैसे HCl अगर एक्सेस में यूज किया है तो वो भी तो अमाइन के साथ रिएक्ट कर जाएगा ना, बिकॉज अमाइन इज बेसिक इन नेचर. तो ये भी सॉल्ट बनाएगा अगर एसिड आपने एक्सेस में लिया हुआ है फॉर हाइड्रोलिसिस. तो इसमें क्या होगा, वन मोर हाइड्रोजन विल गेट अटैच्ड टू इट. सही है था ना. तो दिस नाइट्रोजन विल एक्सेप्ट द H पॉजिटिव आयन फ्रॉम HCl और उसके साथ डेटिव बॉन्ड बना लेगा. तो इसमें जो नाम है ना इसका, एन इथाइल एन मिथाइल अमाइन के बजाय एन इथाइल एन मिथाइल अमोनियम आइन बन जाएगा ये. और इसके साथ जब क्लोराइड लगेगा तो एन इथाइल एन मिथाइल अमोनियम क्लोराइड. चलें आगे बढ़े. okay. इसी तरह अगर हमारे पास अनसब्स्टिट्यूटेड अमाइन मतलब जिसमें नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन हो, तो उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो सिंपल फिर कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया बनाएगा. इसको हम कहते हैं अनसब्स्टिट्यूटेड अमाइन. इस अनसब्स्टिट्यूटेड अमाइड को जब हम ब्रेक करेंगे तो इट विल प्रोड्यूस, दिस पार्ट विल प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द NH2 part cannot produce amine because it does not have any alkyl chain, so this will produce ammonia molecule. इसी तरह अल्कली में the carboxylic acid produced will react with the sodium, तो वो सोडियम कार्बोक्सिलेट बन जाएगा और अमोनिया गैस.
अच्छा, इफ वी रिड्यूस अमाइड्स तो अमाइंस बनते हैं, रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। और अमाइड की रिडक्शन जिस हम रिड्यूसिंग एजेंट से करते हैं दैट इज लिथियम टेट्राहाइड्रिडो एल्यूमिनेट व्हिच इज LiLH4 इन ड्राई ईथर। तो कंडीशन क्या है इसकी, हीट करेंगे तो इट विल ब्रेक डाउन टू प्रोड्यूस अमाइन, मतलब कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा बस इसमें। चलें आगे। अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर जो हमें पढ़ना है दैट इज अमीनो एसिड्स।